Welcome to the new video. This is the last video of this chapter. In previous video, we almost complete all the topics which is the living world. In this particular video, we will discuss what is the need of all this, what is the need of the taxonomy, what is the need of the classification. See, if we do not classify the organism, there will be very much complexity and there will be very much confusion because the diversity is so high. And if I am going to study about each and every organism, that will be take very much time and create many confusion. So if I list out, there are many reasons for the classification, but if I list out the most important needs for the classification, then the first need is, so we will discuss today the need for classification. Classification. Okay, what is the need for classification? Because there is many confusion about many organisms, as because सेठी बहुत सारा confusion अच्छी, बहुत सारा organism अच्छंती, तो each organism विषय जदि मु individually study करिवा को जिबी, then गोटे organism पाखरु आ गोटे organism पाखु गला बेलकु जेतेबेले से organism पाखरे किछि similarity रहउची पुनी किछि dissimilarity रहउची, तो that will create a confusion. तो सेथि पे हम classification दरकार. Second होउची, it will prevent the individual study of each organism. जेतेबेले हम ऑर्गेनिज्म मान को क्लासिफाई कर देले, जेमते मु कहली जेतेबेले मु पिला मान को गोटे रूम रे बसई देली आ मु से सेक्शन बी भीतर एंट्री कली, तो मु कहि परिबी ए ग्रुप रे रूम रे बसथिबा प्रत्येक पिला दे बिलोंग्स टू क्लास 11, दे बिलोंग्स टू सेक्शन बी, दे बिलोंग्स टू क्लास स्कूल एक्स, दे ऑल बिलोंग्स टू द सीबीएसई बोर्ड. ए सबु जिंस मु कहि पारि, दे ऑल पास आउट फ्रॉम द क्लास 10th, they are going to promoted to class 12. एई सबु जिंस मु कहि पारिबी regardless तांको भितरे थिबा specificity character को, तांका specific character they are discussed later, but all these general character that can be say by single by observing a single animal. मते से ग्रुप रो each पिला पाखु को जाई कि पचारिबा दरकार नहीं तार सेक्शन कोन, तार स्कूल कोन, तार बोर्ड कोन, बिकॉज़ जदी से स्कूल रे सही सेक्शन रे बसिची that is obvious जे ता पाखरे सही कैरेक्टर सब अछि. दैट मीन्स तमे जतबेले सही पिला मानन को से रूम रे नै कि बसई देलो, ता माने सेठी आउ नॉन रिलेटेड पिला मानकर असेंबलेज हेलानी, सब जगह रिलेटेड पिला गोटे ग्रुप रे बसी गले. ठीक सेम जतबेले तमे क्लासिफिकेशन करिवो दैट प्रिवेंट द assemblage of non-related animals. So third होची the prevent the assemblage of non-related organisms. Okay, जदि सेठी नॉन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म मान का असेंबलेज हेलानी ताले कौन हेला, द क्लोजली रिलेटेड और मे बी आई कैन से द रिलेटेड एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू ए सिंगल ग्रुप. तो मु कहि परिबी द रिलेटेड एनिमल्स, द रिलेटेड organisms form a single group. जेतेबेले गोटे ग्रुप तैयारी से माने करि देले, सो बाय स्टडीइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, जदि मु ग्रुप रो कैरेक्टर स्टडी करि दउची, दैट मीन्स एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर भी मु स्टडी करि देली. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन. सो फिफ्थ नीड होची जे बाय रीडिंग और बाय रिसर्च about the group's character, it will give the characters of
every single organism of that group से ग्रुप रे थिबा प्रत्येक ऑर्गेनिज्म मानकर कैरेक्टर मते कोन हबो मिली जाई पारिबो जेतबळे मु से ग्रुप रो कैरेक्टर को स्टडी करि देली सो दीज आर द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन और द नीड फॉर द टैक्सोनॉमी सो हियर वी ऑफिशियली close the first chapter of your class 11 that is the living world आम एठी taxonomy विषय डिस्कस कले briefly डिस्कस कले and end कले what is the need of that classification or what is the need of that taxonomy next आम second chapter start करिवा which is the classification system okay thank you